Okay guys, so आज another session lecture number 6 जो आम रैपिड रिवीजन बैचेस रैपिड रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करिछु तार आज 6th लेक्चर एवं आज इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस रो पार्ट आमे देखिबा इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस रो पार्ट आमे देखिबा गला थर ई पार्ट रु पाखापाखि जीएस पेपर 1 पेपर 2 मिसे की क्वेश्चंस आस्तिला पेपर 2 रे किछि दे दितला क्वेश्चंस पेपर 1 रे तो थिला तो एई भलिया सो एक्सपेक्ट करिया कि एई भलिया लाइन रे एई भलिया भी माने एई थर भी क्वेश्चंस आसीबो सो क्वेश्चंस देखिबा क्वेश्चन देखिबा कोन ना इन द कंटेक्स्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत हाउ कैन एमएसएमई contributes to India's economic growth and self-reliance. Discuss the policy measures needed to enhance their contributions. Discuss the policy measures. So questions basically आत्मनिर्भर भारत ऊपर context of आत्मनिर्भर भारत एवं तुम्हारा MSME आत्मनिर्भर भारत एंड MSME. So आत्मनिर्भर भारत फर्स्ट हमें देखिए कि व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत. So MSME, as you all know, micro, small, medium enterprises is a very important role play करे in India's economic growth. एवं जो विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत जो अच्छी ताको अचीव करिया पाई सो या सेल्फ रिलायंट इंडिया सो ये सेल्फ रिलायंस कांसेप्ट जो देखिबो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ही आस्थिला काइना इंडिया was not there at that time as a self reliant आमे दिवाली खाइबा की पाउनथलु आमे सेति में जय जवान जय किसान नारा दिया हितला so basically then सही सिचुएशन रु आमे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जडी ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट हला ग्रीन रिवोल्यूशन जुगु बहुत सारा आमर प्रोडक्शन बढ़िला एवं प्रोडक्शन बढ़िया जुगु बेसिकली धीरे धीरे आमे सेल्फ रिलायंट हेलु तो सही लाइन ऑफ एक्शन रे ये आत्मनिर्भर भारत and the key initiative launched by government of India in 2020 MSME are the backbone of the Indian economy and it contributes significantly to the employment innovation export. So employment sector ये बहुत बड़ा employment sector है MSME. In the context of आत्मनिर्भर भारत, MSME can accelerate economic growth, boost local manufacturing, and reduce dependency on foreign imports, and thereby strengthening India's self-reliance. बुझिबला नहीं? So कौन कौन करी पारे? MSME accelerate करिवो economic growth, boost करिवो local manufacturing, and reduce dependency on foreign imports. जोंटा कि आमे एबे भी इंपोर्ट लेड या इंपोर्ट लेड कंट्री आमे अछु लाइक चाइना इज ए एक्सपोर्ट लेड कंट्री ओके सो इवन आमर चाइना टू आमे बहुत सारा एक्सपोर्ट करू इवन इफ चाइना सहित आम पॉलिसी सब क्रिटिसिजम थाए आमे तांको सहित सब लगर हेड रे थाऊ बट स्टिल देन चाइना ऊपर आमे बहुत सारा डिपेंड करू इंपोर्ट करिया पे सो आमे इंपोर्ट लेड कंट्री रे आमे जदि सेल्फ रिलायंस हबु देन ओनली आमे इंपोर्ट जगह रे जो डिपेंडेंसी अछि ताको रिड्यूस करि परिबा. So contribution MSME to economic growth and self reliance. First hela kon na employment generation. MSME are one of the largest employment generator in India. Was one of the largest employment generators in India. They provide jobs to millions, particularly in rural and semi-urban area, and help reduce unemployment. By contributing significantly to workforce, MSME plays a crucial role in inclusive growth and poverty alleviation. Okay. India जितने भी सेक्टर अच्छी MSME सब लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बहुत सारा लोगों को से जॉब दउचंती चाहे खास करके रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया रे सो अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस करि पारे ये हेल्प करचंती
So that resulted in inclusive growth and poverty alleviation. जदि employment generation करि पारुची, unemployment reduce करची, obviously poverty alleviation and growth को से help करची. So promoting local manufacturing. So MSME are integral to the local manufacturing. MSME are integral to the local manufacturing and industrial diversification. They help promote Make in India. They help promote Make in India by manufacturing wide range of goods. By manufacturing wide range of goods from basic consumer products to high tech goods. So आमर local made products basically धीरे धीरे ये होची industrial diversification and Make in India जो एम अच्छी कि आम इंडिया रे ही प्रोड्यूस करिवु एवं मैन्युफैक्चरिंग हब हबु सेटा ये साकार करि पारे मध्य हेल्प करिवो. This contribute to reducing India's dependence on import and enables value added production in within the country. आ गुटे कथा हला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तुमर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जदि आमे मेक इन इंडिया करिवा, मेक इन इंडिया बेसिकली प्रमोट करे कोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. जदि भी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुए तांकर कंट्रीब्यूशन रहिबो एवं से माने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत सारा हेल्प करिवे एंड एनेबल्स वैल्यू एडेड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री. वैल्यू एडेड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री. Boosting export. MSME are key contributor to India's export sector. Particularly in manufacturing, key contributor to India's export sector, particularly in manufacturing of the textile, handicraft, machinery, chemicals and automotive parts. So these are very important point. These are very important point for economics perspective also. From economy perspective also ये questions तुम बहुत बड़ा काम रे आसीबो. By expanding export capability, MSME can help India to reduce trade deficit. आमर trade deficit अछि ना, हमें mostly import trade balance आमर कोन basically imbalance अछि. जेते हमें आणुचु import अधिका करछु, export कम करछु. So trade imbalance जोटी कि trade deficit अछि ताको reduce करी हबो and integrate into global supply chain as a important player. आज यदि यूएसए एते पावरफुल कंट्री अछि बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट. चाइना एते इकोनॉमिकल एते स्ट्रांग अछि बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट. कौन सेक्टर है करि परिबो? टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, मशीनरी, chemical and automotive parts. Then innovation and technological advancement. MSME are crucial for fostering innovation and technological advancement. Okay. कौन ना न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करिवा, डिजिटलाइजेशन, मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड, they enhance productivity and quality standard, thus improving their competitiveness in the global market. Thus improving their competitiveness in the global market. Then now कौन करियो? So आमे कौन देखले employment generation. This is first the most important point. Promoting local manufacturing. This is also very important point. Boosting export, innovation and technological advancement, and promoting regional economic development. Basically MSME जो देखियो पूरा ऑल ओवर इंडिया रे जियोग्राफिकली सबू नुक एंड कॉर्नर रे डिस्ट्रीब्यूट हो जाई, खास करके स्मॉल अर्बन एरिया, स्मॉल सिटीज, विलेज एरिया and their growth contribute to regional development. Okay, so regional economic development रे ये help करिवो and especially in the backward and remote area. So this decentralization of industrial growth, so MSME को basically the MSME sector contribute करछि
decentralization of industrial growth, which reduces the regional balance. जदि इवन क्वेश्चंस आसे तुमे गोटे क्वेश्चंस को केवल गोटे आंसर देखनी, क्वेश्चंस आसिला कि इनक्लूसिव डेवलपमेंट पई या बैकवर्ड रीजन रो डेवलपमेंट कोन कोन करि परिबो, तो एमएसएमई गोटे बहुत बड़ फैक्टर। एमएसएमई रो डेवलपमेंट करबा सेही पर्टिकुलर एरिया रो से रीजनल इंबैलेंस को रिड्यूस करिवो, बैकवर्डनेस को रिड्यूस करिवो। तो ये गोटे एग्जांपल दे परिबो। So several scheme has been introduced under the mission कौन ना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, emergency credit line guarantee scheme, subordinate debt for stressed MSME. So this scheme provide 20,000 crore as a subordinate debt to MSME that are stressed or classified as non-performing asset. So the initiative aims to support these enterprises in reviving their businesses by facilitating access to credit. Support for marginalized individuals for livelihood and enterprises. SMILE. So basically तांको जी 20,000 crore जोटा एनपीए वगैरह हो जाइए सी परफॉर्म करूनी माने सही तांको किछि दिया होची स्ट्रेस्ड और एनपीए जोटा कि एमएसएमई को तांको सपोर्ट करा होची कि तांको रिवाइव करे, बिजनेस रिवाइव करिया पई सपोर्ट कर। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव and support marginalized individual for livelihood enterprises. SMILE scheme. So MSME sector is crucial for achieving goal of Atmanirbhar Bharat by contributing economic growth, employment generation, local manufacturing, export promotion. However, to unlock their full potential, MSME need targeted policy support, particularly in area of finance, technology adoption, infrastructure development, and regulatory reform. The coordinated approach by the government and private sector will enable MSME to thrive and contribute to India's goal of self-reliance and economic resilience. These are very important point. So तुम्हें एग्जाम रे बहुत किछि एडु सेडु लिखिया दरकार नहीं। एग्जाम रे एतिकी जो जमिति लिखियो जोडा तुम पाखा माने रिक्वायरमेंट अछि जहा क्वेश्चन सिर्फ मागिछि ना कि मन इच्छा एडु सेडु गाई किछि लाभ नाही ना। अल्टीमेटली तुम्हें टाइम भी लॉस करिवो जदि एडु सेडु किछि गाइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Self-help group. The penetration of self-help groups. The penetration of self-help group in rural area in promoting participation in development program. Is facing socio-cultural hurdles. Examine. This is UPSC ro questions आस्थिला। तो आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म ओडिशा स्पेसिफिकली क्वेश्चन आउरी बेसी इंपोर्टेंट हो जाए। तुमरो एबे ये चेंज कर दिया हिची तुमरो मिशन शक्ति को चेंज करी कोन कराई छी एनी आइडिया? सेल्फ हेल्प ग्रुप formed on the premise of collective effort and shared responsibility have emerged as a pivotal social innovation from promoting participatory development, particularly in rural area context. By catalyzing small scale entrepreneurship, enhancing financial literacy, and fostering economic inclusion, self-help group have the potential to address the socio-economic gap that persists in the rural area. रूरल एरिया रो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल हेल्प हो जाए या ट्रेनिंग हो जाए या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करिया पे ये बहुत बड़ा हेल्प करे। जेमती
कुटुंबश्री कुटुंबश्री सक्सेस स्टोरी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जदि किसी सुनिबा कुटुंबश्री केरला रे launched in 1998 and kutumbasri is one of the most successful self help group model in India, empowering women through microcredit and entrepreneurship. Okay, then self help in Andhra Pradesh, the state has seen significant success with self help group under the National Rural Livelihood Mission, transforming the lives of the millions of the rural women. Rural women ର ଲାଇଫ୍ କୁ transfer କରୁଛି. Then Amul Dairy, this is very important. Amul Dairy Corporation, although not strictly help group, but Amul cooperates on similar principle, demonstrating how collective effort can revolutionize the industries. Basically, Operation Flood ର ଗୋଟେ part. So these are some example of success story of self help group. Socio-cultural hurdle कौन? So questions देखो, penetration of self help group in rural area and promoting participation development program. Socio-cultural hurdle, question थिला socio-cultural hurdle. Gender inequality, this limits the ability of women, this limits the ability of the women to participate in self help groups, even though these groups often aim to empower women. So this limit the ability of women to participate in self help group, and even though this group often aim to empower women. Gender inequality. Okay. Then caste system. Member of the lower caste often face discrimination and exclusion, which can impede their participation in self help group. Then illiteracy and lack of education. Illiteracy and lack of education. The highly illiteracy rate in rural area, particularly among the women, hinder their understanding of benefits of self help groups, which can make them hesitant to participate. तुम्हें जानी पारनाती कौन benefit? Then socio-cultural norms and beliefs. The belief that women should not be involved in the financial matter can act as a barrier to their participation in self help. आमे गोटे अछि कि पुरुष माने ही पैसा कथा बुझिबे, वुमेन माने बुझिबे नहीं, मुंडो खड़ाउनी. तो ये गोटे norms of beliefs जो सबगुड़ा gender inequality, caste system, illiteracy and lack of education, and socio-cultural norms and beliefs. So देखियो, addressing this socio-cultural hurdle is crucial for increasing the penetration of self help group in rural India. ସେଇଥିରେ कौन कौन करियो ना community sensitization या विषय करिया देखा बेसिकली लोकंग भितरे awareness create करिया दरकार. तो benefit of self help group, promoting gender equality, providing basic education and financial literacy program, and working toward more inclusive society free from caste based discrimination. ये करिवा तो जरूरी कहबो, बड़ बड़ कथा कहबो, बट ये लिखि दियो. By overcoming these challenges, self-help group can play a significant role in empowering individuals and promoting development in rural India. And promoting development in rural area.
Clear? Next, how has religiosity and religious belief, how religiosity and religious beliefs shaped the values of the Indian society? Illustrate. What do you mean by religiosity? Any idea? So attached to religion. Not really. Religiosity. Secular. Secular? Okay. No. Strong religious belief. It is not secular. Strong religious belief. That is strong feeling or belief regarding your religion. So mostly emphasis तुम्हें जहाँ भी किसी काम करो सी emphasis दबो कहाँ ऊपर ना religion ऊपर या religious ऊपर. Then India is a deeply religious society. India is a deeply religious society where faith has played a crucial role. Where faith has played a crucial role in shaping our cultural norms, ethical values, and social structure. So the diversity of religious tradition, that is Hinduism, Islamism, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism and others has influenced the collective ethos and governance and day-to-day functioning of the people. The key way in which religiosity has shaped the Indian society. Basically, a strong feeling regarding one's religion. Would learn ethical and moral values. Ethical and moral value. Social structure and caste system. Then family and marriage tradition. Festival and cultural unity. ମୁଁ ଖାଲି main point गुड़ा खाली कहि दउची. Then law and governance and impact on art, literature and architecture. So का Indian society केमती shape करूची तुम ethical and moral values उपरे. तो yes, religiosity strong. से religion रो तुम्हें ethical and moral value को follow करिवो. And से अनुसार तुमरो caste system और social structure भी से अनुसार formation होची. आउ फैमिली एंड मैरिज ट्रेडिशन तुम जानिच आम रिलीजन बेस्ड मैरिज करूँ आम फिलिंग बेस्ड आम आइडेंटिटी बेसिस रे आम मैरिज करूँ एंड फेस्टिवल कल्चरल यूनिटी लॉ गवर्नेंस भी से भाया होची एंड इम्पैक्ट ऑन आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर ऑब्वियसली होची जेमती आमर माननीय नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट देन धीरे धीरे लोकल एरिया रे तार इन्फ्लुएंस धीरे धीरे अलग अलग आर्किटेक्चर हवा ये भी बेसिकली रिलीजियसिटी या रिलीजियस फीलिंग ऊपर है किसी देखिवा जदि भक्ति मूवमेंट एंड सौखी मूवमेंट देखिवा ये प्रमोशन का डिवोशनलिज्म एंड ब्रेकिंग रिलीजियस बैरियर एंड एडवोकेटिंग सोशल यूनिटी against the religious city. Then Gandhian philosophy inspired by Hinduism, Jainism and Christianity. Gandhi promoted ahimsa and sarvodaya, welfare of all. Then inter-religious harmony. Example like Akbaruddin Ilahi and composite culture of Ganga, Jamuni, Tehzeeb in North India highlight the religious inclusivity. एटाला inclusivity माने religious bill को inclusive religiosity है basically strongly religious जो माने सो क्वेश्चन थिला कोना इंडियन सोसाइटी उपरे केमिति से वैल्यू ताको इंपैक्ट करूची
So these are points ताकू चाहिए तुम एक्सप्लेन करि परिबो सोशल स्ट्रक्चर हो कास्ट सिस्टम हो फैमिली मैरिज these are the point 6टा पॉइंट ताकू मेंशन करिबो एवं किछि हिस्ट्री और सोसाइटी रे एग्जांपल दे देबो So India society is an exemplification of multicultural, multi-ethnic and multi-ideological construct which coexist at once, striving to strike harmony and also to retain its individuality. Next, examine the factors that can be attributed to rising divorce rate in India. एबे ये न्यूज रो अछि सो सेति पई ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपोर्टेंट है एवं बहुत खाली एबे ने लास्ट 6 मंथ 1 ईयर हला सेही कोन अतुल श्रीवास्तव ना के गोटे अछि एटा टिके अलगा पेज रहि जाई छी एटा नो So a money control analysis of data from a periodic labor force survey finds that more Indians are getting divorced now than 7 years ago, and the proportion of divorced or separated women in rural area is on the rise. Even rural area रे भी धीरे धीरे बढ़ी चलछि. In urban India, the ratio of divorced men has risen faster from 0.3% in 17-18 to 0.5% in 2023-24. So among the women surveyed by periodic labor force survey in cities, 0.7% were divorced compared to 0.6% 7 year back. So women रो भी बढ़ी ची मेंस रे भी बढ़ी ची तो डिवोर्स रेट राइज हेई ची अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल एनालिसिस डाटा कोन ना पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे इवन रूरल एरिया रे भी बढ़ी ची कोन नॉर्म्स कोन पई ये रीजन होची तार मेन पॉइंट चला वुमेन एम्पावरमेंट रिसेंटली गोटे केस स्टडी माने जो मु जने मिसिथिली जोडे लोक सहित सी एक्चुअली अच्छी पटना हाईकोर्ट रे गोटे से हाईकोर्ट रे गोटे जोंडे कि डिवोर्स रिलेटेड केसेस रिलेटेड से काम करे से ता पाखरु मु सुनिले कि गोटे दिन रे से पाखापाखि 46 केस रो डिस्पोजल हेतला माने फाइनल आफ्टर जो 6 मास रो कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाए से कूलिंग ऑफ पीरियड परे फाइनल डिवोर्स हेतला 46 वन डे रे एवं सी तांको कथा कहि अनुसार सर मोस्ट ऑफ द जो डिवोर्स हेजी सेइथरे जोडे कि मेजर रीजन मिलिथिला कोन ना वुमेन एम्पावरमेंट ता माने कोन वुमेन एम्पावर माने कोन बेसिकली इंडिपेंडेंस सेल्फ इंडिपेंडेंस सेल्फ इंडिपेंडेंस जो माने वर्किंग वुमेन अछंती तांको भितरे ये रेट अधिक होची तो सबुटो सो वुमेन एम्पावरमेंट सब किछि आसी गला सेल्फ इंडिपेंडेंस आसी गला एवं तांको भितरे जो फीलिंग्स थिला कि आमे एका बंची परिबुनु से जिंसटा आउ कमी गला एंड एट द सेम टाइम तुम देखो वुमेन रो एम्पावरमेंट हेची वुमेन भाबुची भाई आमे मेन ठू कम नुहो आउ से माने जी जार लाइफ जेमती बंचे भाई चाहू जाती बट एट द सेम टाइम द माइंडसेट ऑफ द मैन इज नॉट चेंजिंग
So that is the difference माने ये होची कि राइजिंग जोने कि चेंजिंग टाइम अनुसार मेल रो माइंडसेट चेंज होनी मेल रो सो पेट्रियार्कल माइंडसेट से अछि आ फीमेल रो जो माइंडसेट से टिके इवॉल्व हे गलानी जडे कि से माने फील करछन बहुत वर्ष हमको सप्रेस करा गला बहुत दिन पर्यंत सप्रेस करा गला हमको एम्पावर करा जाऊ तो सही अब एम्पावर बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज सबुठ बड़ एम्पावरमेंट जहाँ कि इकोनॉमी रे जे एम्पावरमेंट अछि जे इकोनॉमी रे इंडिपेंडेंट अछि से सबुठ बड़ एम्पावरमेंट रो पार्ट so reduced social stigma around divorce urbanization and modern lifestyle delayed marriages and changing priorities infidelity and communication gap so first है कौन ना वुमेन एम्पावरमेंट रिड्यूस स्टिग्मा अराउंड डिवोर्स कि डिवोर्स देले आमे बंची परिबुनी कि आमे चली रही परिबुनी आगु कोन वुमेन माने माड़ खाउतले ये होतले जीवन सारा से भाबु जंदी कि स्वामी ही सब किछि हमर भगवान से आम पई सब किछि से मारिले भी ठीक अछि किछि नै आमे चली जबु अर्बानाइजेशन एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल डिलेड मैरेजेस एंड चेंजिंग प्रायोरिटी धीरे धीरे लोक चेंज हेलानी आगु फैमिली गोटे प्रायोरिटी थिला सबुठ बड़ प्रायोरिटी एंड धीरे धीरे इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे अलग लाइफस्टाइल ये प्रायोरिटी लिस्ट आसी गलानी इनफाइडेलिटी एंड कम्युनिकेशन गैप ये रिसेंटली जो गोटे देखिबो गोटे क्रिकेट स्टार चाहल यजवेंद्र चाहल तांकर ये केसेस तांकर थिला कि इनफिडेलिटी जोंटे कि ट्रस्ट जोंटे कि फेथफुल नांती देन सिमिलरली वर्क लाइफ इम्बैलेंस एंड स्ट्रेस रोची किए कार कथा सुनिया चाहूनांती चेंजिंग परसेप्शन ऑन लव मैरेजेस एंड रिलेशनशिप धीरे धीरे हमार परसेप्शन लव ऊपर गलानी बेसिकली किए का कोन देई पारुची मैरेजेस इज नॉट अबाउट बेसिकली गोटे इंस्टीट्यूशंस मैरेज इज अबाउट द पार्टनरशिप है ना एंड रिलेशनशिप राइजिंग अवेयरनेस एंड लीगल सपोर्ट भी आसे लोक अवेयरनेस भी क्रिएट हेलानी कि भाई आमे कहीं कहा अंडर रहिबू कहा को सहिबू या सेम वे कि मेल रो जो माइंडसेट भी देन अर्बानाइजेशन एंड न्यूक्लियर फैमिली अर्बानाइजेशन दी थरे गला न्यूक्लियर फैमिली भी यार गोटे पार्ट सो दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट माने नॉर्म्स चेंजिंग सोशल नॉर्म बिकॉज ऑफ दिस divorce rate is increasing so ये separation rate overall India 0.8% 84% बट कथा ला कि ये जो डाटा ये रिसेंट डाटा किछि नाही ये डाटा बहुत पुराना एवं रिसेंट डाटा अनुसार आउरी किछि पाइबो ये 2011 रो सेंसस रो डाटा So while rising divorce rate in India indicates changing social dynamics and greater personal agency, it also reflects the need for stronger emotional compatibility, mutual respect, and communication in marriages. So effort to promote premarital counseling, conflict resolution, and mental health support can help address the rising trend of divorces. So तार सॉल्यूशन भी कहिलो कौन कौन रीजन भी कहिदेलो कंक्लूजन एवं सॉल्यूशन भी कहले कौन कौन करा जाई पारे. Then last question, what is child labor? Discuss the impact of child labor in India. Child labor, the
52nd report from the Parliamentary Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development indicates that achieving the goal of eliminating child labor by 2025 require a uniform definition of child across the various law. Child बहुत सारा law रे अलग अलग definition अछि. So according to the convention on the rights of the child, a child is defined as every human being below the age of 18. Unless under the law applicable to child, majority is attained earlier. So child labor 2025 सुधा आमर एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर गोल अच्छी देन एठी कैलाश सत्यार्थी वगैरह कथा ता इनक्लूड करिवो बचपन बचाओ आंदोलन वगैरह ये पार्ट को इनक्लूड करिया पड़िवो एंड रिड्यूस एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सब इंपैक्ट कोन ना एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट कमी जाउची चाइल्ड लेबर प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल हिंडरिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी. Out of 160 million child laborers globally, 53 million are out of school. It's a very big number. 160 million ru pakapaki 53 million out of school. Health problems. There are 73 million children involved in hazardous work globally. So hazardous work can lead to respiratory issues, chemical poisoning and injuries among them. Then psychological damage. Psychological damage. Working long hours in difficult condition causes stress, anxiety and depression among the children. छोटो पिला ठू डिप्रेशन आसिलानी छोटो पिला बेलू से डिप्रेशन होइबो तो कोन हबो अवस्था. Then impact on the society. It perpetuates poverty cycle. जदि children जदि education जगह काम करिवो ता माने are less likely to break out the poverty as a adult है ना नहीं. This trap family in a cycle of poverty across the generation. कौन हम देखो बाप पॉवर्टी गरीब थिला पु को काम करेला पुओ काम कला सी भी काम करी से बळा रहिबो ता पुओ काम करिवो तो ये जो साइकिल जो ट्रैप पॉवर्टी ट्रैप ये कंटीन्यूअस रहबो जदी जणे पाठ पढी कि किछि करला अलगा तार लाइन ऑफ एक्शन तार प्रोफेशन चूज करनला त सी अलगा हे गेला. Hindrance economic growth. Child labor reduces potential for innovation. से पिलाटो काम कला से काम किछि आसी करिवनी से आ इनोवेशन किछि भाबिवनी. The development of skilled workforce. A less educated workforce hinder a country's long term economic growth. A less educated workforce hinders a country long term economic growth. So according to World Bank, increasing the average year of schooling by 1 year can increase the country's GDP by 0.37%. This is very, very important. Very, very important data. Do write it down. Do write now. जदि average year of schooling 1 year बढ़े देलो, average year of schooling 1 year बढ़ियो, country GDP बढ़ी जीवो 0.37%. So social inequality. Child labor depends social inequality by restricting social mobility for children from poor family and creating a disadvantaged class. एथिरे टिके तुमे मेंशन भी कर दबो हमरो जोंडे की आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट्स रो पार्ट ता विषय मेंशन करिवो. सो गवर्नमेंट कोन कोन इनिशिएटिव नै छि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंट्रोड्यूस आर्टिकल 21A to constitution and making education fundamental rights not introduced on the basis of article 21A. On the basis of article 21A basically right to education आसी. So एथिरे कोन करछि
ना एजुकेशन को फंडामेंटल राइट करा हैतिला आर्टिकल 21 रे एंड सेइथरे कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देबो चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 एइटे राज्य एजुकेशन एक्ट देन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 ये कौन करछि ना चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स एंड एडल्ट बिलो 18 इयर्स इन द हाजरियस ऑक्युपेशन रे मना करुछि प्रोहिबिट करुछि द नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर इन 1987 aims to eliminate child labor by prohibiting and regulating it, offering welfare and development program for children and their families, and ensuring the education and rehabilitation of working children. जे ऑलरेडी चाइल्ड लेबर जहाँ को निवृत्त कराई ताकू आनी गोटे जगह रिहेबिलिटेट करा जीवो एवं ताकू एजुकेशन दिया जीवो देन चाइल्ड नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट ये गोटे स्कीम जोटे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन देव वोकेशनल ट्रेनिंग देव मिड डे मील्स देव स्टाइपेंड देव हेल्थ केयर टू रेस्क्यू चिल्ड्रेन फैसिलिटेटिंग देयर ट्रांजिशन इनटू फॉर्मल स्कूलिंग देन पेंसिल पोर्टल दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये माने लॉन्च करथिला सो ये एथरे कोन ना सेंट्रल गवर्नमेंट रहिबो स्टेट गवर्नमेंट रहिबे डिस्ट्रिक्ट सिविल सोसाइटी एंड द पब्लिक इन इराडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर हेल्प करिवे चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी करिवारा इथरो ए पेंसिल पोर्टल काम एंड राटिफाइंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन इंडिया राटिफाइड 2 कोर ILO कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर इन 2017 दीज आर द इनिशिएटिव गोटे राइट टू एजुकेशन एक्ट हैतिला चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 National Child Labor Project Scheme, Pencil Portal, this is very important, ratifying ILO Convention. So the Parliamentary Standing Committees, the Parliamentary Standing Committee report emphasizes need for clarifying legal definition to avoid justice delays and excluding hazardous occupation for adolescents and formulating guidelines for effective use of fines collected from child labor violation. Additionally, it suggests assigning traffic police. So additionally, it suggests assigning traffic police duty of reporting child labor at traffic lights and establish a national child traffic mechanism for better coordination and support of rescued children. Okay. सो ये इम्पोर्टेंट तुमर 5टा क्वेश्चंस थिला आई होप तुम्हें बहुत सारा इनफॉरमेशन पाई जाइथिबो इथरु एवं एटा को एग्जाम रे काम रे लगेबो तार नोट्स कर देथिबो क्वेश्चंस इश्यूज बेस्ड कोन इश्यूज थिला से इश्यूज रिलेटेड नोट्स कर दोथबो तुम डेली घंटे भीतर जदी 5-5टा पाई गला तुम्हें बहुत किछि जान इनफॉरमेशन पाई जिवो एवं एते दिन भितरे मु जदी नेक्स्ट आवरी तुमर 5टा 6टा हला आवरी 20टा 18 19टा मु सेशन करेबी लेट्स सी कोन होउची सो थैंक यू गाइस आज ये थाऊ पुणी काली देखा 10:30 टिल देन बाय बाय गाइस टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल Thank you, sir.